everyone, I am Shweta. Welcome to the session at our channel Vidyarthi Pro online learning platform. This platform is very helpful for the memory recalled questions and many other important updates like CUET, Intermediate, BCom, BBA, NET JRF, UPSC, UPPSC, UPSC and many other entrance examination papers. And in today's session, we will cover about very important memory recalled questions of the 6th unit of business studies, that is staffing. Okay, so let's start with our first question, and our first question is, what is staffing? And the options are: option number 1, the process of organizing work; option number 2, the process of acquiring, deploying and retaining a workforce; option number 3, the process of setting goals and objectives; option number 4, the process of controlling work activities. क्वेश्चन में स्टाफिंग का बेसिक मीनिंग पूछा है एंड द ऑप्शंस एंड देयर आर 4 ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग अ वर्कफोर्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग अ वर्कफोर्स. क्योंकि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है, और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग अ वर्कफोर्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल, असाइनिंग देम टू एप्रोप्रिएट रोल्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर जॉब्स इफेक्टिवली. In simple words, staffing is the process of finding the right worker with appropriate qualifications or experience and recruiting them to fill a job, position or role. Our next question is, why is staffing important for organizations? Staffing organizations के लिए इतना important क्यों है? And the options are: option number 1, it minimizes cost, ये cost को minimize करता है; ऑप्शन नंबर 2, इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है; और ऑप्शन नंबर 3, इट एंश्योर्स द कॉम्प्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स; एंड ऑप्शन नंबर 4, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव देयर गोल्स. एंड आवर correct answer for this question is option number D, it helps organizations to achieve their goals. स्टाफिंग एक ऐसा इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनकी वो गोल वो अचीव कर सकें बाय एंश्योरिंग दैट दे हैव द राइट पीपल विद द नेसेसरी स्किल्स, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हैं टू कैरी आउट देयर टास्क effectively. Our next question is, what are the benefits of effective staffing? And the options are: option number 1, improved employee morale and motivation; option number 2, higher productivity and performance; option number 3, increased customer satisfaction; and option number 4, all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. इफेक्टिव स्टाफिंग के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉई मोरल एंड मोटिवेशन, इट इम्प्रूव्स द हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Our next question is, what is the role of the staffing in organizational development? Organizational development में staffing का क्या role है? And the options are: option number 1, it helps organizations adapt to changing circumstances; option number 2, it ensures the compliance with legal requirements; option number 3, it minimizes the cost; option number 4, it reduces the product quality. Any guesses? And the correct answer for this question is option number 1, it helps organizations to adapt to changing circumstances. स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, बाय हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टाफिंग के थ्रू वो अडॉप्ट करते हैं. एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जितना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, इट्स स्टाफिंग नीड्स में चेंज, रिक्वायरिंग इट टू हायर न्यू एम्प्लॉयज़ और रीअसाइन एग्जिस्टिंग वंस टू डिफरेंट रोल्स. This helps for the dynamic growth and development of any organization. Our next question is, staffing makes for higher performance by putting right person on the right job. Is this statement is true or false? And the options are: option number 1, false; option number 2, true; option number 3, maybe true or maybe false; option number 4, can't determine.
And the correct answer for this question is option number B, true. Staffing एक ऐसा process of finding and placing the right people in the right position within an organization है. Therefore, this statement is the correct statement. That means true. Option number B is the correct answer. Our next question is, appointment is as per the requirement and satisfaction of the job. This is related to which importance of staffing? And the options are option number 1, optimum utilization of human resources. Option number 2, improves job satisfaction. Option number 3, placing the right person at right place. Option number 4, filling the roles by obtaining competent persons. And the correct answer for this question is option number C, placing the right person at right place. अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द जॉब. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंश्योर करता है दैट एम्प्लॉयज इज वेल सूटेड फॉर द जॉब एंड इज लाइकली टू परफॉर्म वेल, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी. जो भी वो काम करेंगे दैट इम्प्रूव्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. देयरफॉर प्रॉपर प्लेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग process that can contribute to the success of any organization. Okay, so our next question is, which of the following is the first step of the staffing process? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस है? And the options are option number 1, recruitment. Option number 2, placement and orientation. Option number 3, estimating the manpower requirement. कितनी ज़्यादा manpower की requirement है वहाँ पर exactly. And option number 4 is the selection. And the correct answer for this question is option number C, estimating the manpower requirement. ये सबसे पहला और foremost step है staffing process का. The step involved in the staffing process are manpower planning, recruitment, selection, placement, training, development, promotion and transfer. एंड इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस? एंड द ऑप्शंस आर option number 1, recruitment. Option number 2, placement and orientation. Option number 3, estimating the manpower requirement. Option number 4, training and development. And the correct answer for this question is option number 4, training and development. Again, the staffing process involves manpower planning, recruitment, selection, placement and then training. Therefore, training is the final step in the staffing process. Our next question is, recruitment is a positive step whereas selection is a negative step. This statement is what? Option number 1, partially true. Option number 2, true. Option number 3, false. And option number 4, none of these. रिक्रूटमेंट पॉजिटिव स्टेप है वेयर एज सिलेक्शन जो है नेगेटिव स्टेप है. ये स्टेटमेंट सही है, गलत है या पार्शियली सही है या इनमें से कुछ भी नहीं है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है बिकॉज रिक्रूटमेंट एक ऐसा पॉजिटिव स्टेप है दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू attract the potential candidates, whereas selection is a crucial process जो कि allows them to choose the best candidate for the job based on objective criteria, and the organization rejects all other candidates. Therefore, selection is a negative process and recruitment is a positive process. Our next question is, an analysis that enable an assessment of number of human required in the organization is what? Options are option number 1, development. Option number 2, promotion. Option number 3, workload analysis. And option number 4, workforce analysis. And the correct answer for this question is option number D, workforce analysis. वर्कफोर्स एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है दैट एनेबल्स एन असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Workforce planning is the process of assessing an organization's current and future staffing needs and developing a plan to ensure that the organization has the necessary talent to achieve its goal. Therefore, option number D, workforce analysis is the correct answer for this question. And हमारा next question है, which of the following is a component of staffing? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि component of staffing है? And the options are option number 1, recruitment. Option number 2, selection. Option number 3, training. And option number 4, all of the above.
The correct answer for this question is option number D, all of the above. ये सारे ही components of staffing है. Staffing involves finding, selecting, training and placing employees in the right roles within an organization to achieve its goal, as well as individual goals भी और जो organization के goals हैं उन्हें भी. And our next question is, the process of attracting job seekers to build a pool of qualified job applicants is what? Options are option number 1 recruitment, option number 2 selection, option number 3 training and option number 4 induction. And the correct answer for this question is option number 1 recruitment. Recruitment एक ऐसा process है जो कि attract करता है job seekers to build a pool of qualified job applicants. Recruitment is the process of identifying and attracting potential candidates from within and outside the organizations to fulfill open positions. Therefore, option number 1 recruitment is the correct answer for this question. Our next question is, which of the following is an internal source of recruitment? And the options are option number 1 recommendation from present employee, option number 2 campus selection, option number 3 web publishing and option number 4 transfer. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसफर. ट्रांसफर एक ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दैट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व करता है फिलिंग जॉब वैकेंसीज फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही या तो वो प्रमोट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या डिमोट भी करते हैं existing employees or inviting them to apply for new job openings. These are the known as internal source of employment. So our next question is, which of the following is an external source of recruitment? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ऑप्शन नंबर 2 लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दैट मीन्स बाहरी स्रोत हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, वो इन्वॉल्व करते हैं अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ लाइक प्रमोशन, ट्रांसफ़र ऑफ employees from one post to another post. This is the internal source of recruitment, whereas external source of recruitment involve करता है बाहर से people, बाहर से जो employees हैं उनको hire करना through the methods such as job posting, referrals, job fairs and recruitment agencies. Therefore option number D, all of the above is the external source of recruitment. अब external source of recruitment क्या क्या होते हैं? जैसे कि employment exchanges, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और एडवर्टाइजिंग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म विच कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट विच इज ऑथेंटिकेटेड एंड अरेस्टेड बाय हिम और हर इज व्हाट? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 जॉब ऑफर, ऑप्शन नंबर 2 मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट. क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट का जो मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है, और समटाइम्स इट रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ जॉब टू. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेस्ट इज हेल्पफुल इन असेसिंग द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि हेल्पफुल होता है टू इंडिविजुअल कैपेसिटी को असेस करने के लिए फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स सीखने के लिए? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 ट्रेड टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 पर्सनालिटी टेस्ट. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है दैट इज डिज़ाइन टू मेजर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू मेजर, मापने के लिए जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है, जो इंडिविजुअल एक सपोज द पर्सन एक्स है, उसकी वो कितनी एबिलिटी से न्यू स्किल्स सीख सकता है और परफॉर्म कर सकता है जो भी उसे टास्क असाइंड हो. दिस इज़ द एप्टीट्यूड. So for testing, for measuring this aptitude,
aptitude test is being conducted. Aptitude tests are often used as a part of the selection process for jobs that require specific skills or knowledges. Therefore, aptitude test is helpful for assessing the individual's capacity for learning new skills. Our next question is, which type of training is provided to the new employees of an organization in order to familiarize them with the organizational rules and policies, their superior and subordinate and so on. क्वेश्चन का ये कहना है कि किस टाइप की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हें फॉर प्रोवाइडिंग देम टू अ फैमिली इन्वॉर्मेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स से, पॉलिसीज से, जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट इन्वायरमेंट कल्चर है उससे वो फैमिलियराइज हो जाएं. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 apprenticeship training, option number 2 induction training, option number 3 vestibule training, option number 4 internship training. And the correct answer for this question is option number 2 induction training. मेनली इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, इट इज़ एन ओरिएंटिंग ट्रेनिंग इज डिज़ाइन टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ बिकम एक्लिमेटेड to their new work environment and understand the expectations and culture of the organization. ये एक ऐसी type of training है that typically helps in include information about the company's history, company का क्या mission है, क्या values हैं company के, as well as introduction to the key personnel and departments. Mostly induction training एक तरीके से welcome offer है for the new employees, कि जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका कैसे एक फैमिली वर्क कल्चर एक क्रिएट करने के लिए. मोस्टली इंडक्शन प्रोग्राम्स जो है वो 7 डेज़ के लिए होते हैं हर कंपनी में, और जो इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं दैट इज़ कंडक्टेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. Our next question is the filling the blanks type questions, and the question is, under the which method of training a trainee is put under the guidance of master worker. ऐसा कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें कि जो ट्रेनी है, जो सीखने वाला बंदा है, उसको किसी मास्टर के गाइडेंस में रखा जाता है. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 apprenticeship training, option number 2 induction training, option number 3 vestibule training, and option number 4 internship training. And the correct answer for this question is option number 1 apprenticeship training. क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोसीजर है, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंडर जो ट्रेनीज़ रहते हैं वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, जो उन्हें ये सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होती हैं कंपनी की क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एज वेल एज क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस. क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इज़ द टाइप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जब हम काम करते करते सीखते हैं, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एंड जब हम काम करने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीजर को फॉलो करके फिर हम ऑन द फ्लोर आते हैं, दैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. Our next question is, name the training technique which duplicates the actual work environment. कोई ऐसा ट्रेनिंग टेक्निक बताना है कि जो डुप्लीकेट करता है एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट को. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 apprenticeship training, option number 2 induction training, option number 3 vestibule training, and option number 4 internship training. And the correct answer for this question is option number C vestibule training. And the correct answer for this question is option number C vestibule training. Vestibule training एक ऐसा ट्रेनिंग टाइप ऑफ टेक्निक है दैट इज़ सिमिलर टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग. वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब हम काम करते करते सीखते हैं. ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक के सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर है, बट टेक्स प्लेस इन अ सिम्युलेटेड वर्क इन्वायरमेंट. वेस्टिबल ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है इन अ सेपरेट और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में दैट रेप्लिकेट्स द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट. इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम लोग जब कार सीखते हैं तो कार सीखते हैं वो सिमिलर फील्ड होता है, सब कुछ सेम होता है, हमारे साथ सेम वो इन्वायरमेंट होता है, बस हम उस टाइम पे जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं दैट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which option is correct for this fill in the blanks? And the question is, what is very useful source of recruitment for hiring casual or badli workers to whom compensation is provided on a daily wage basis?
And the options are option number 1 direct recruitment, option number 2 labor contractors, option number 3 advertising on television, and option number 4 placement agencies and management consultants. And the correct answer for this question is option number B labor contractors. क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या लेबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है फॉर हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स टू होम कॉम्पेंसेशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन द डेली वेज बेसिस. डेली बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स को हायर करते हैं, दैट इज़ जिनके थ्रू हम हायर करते हैं, वो होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑफन यूज टू फिल टेम्पररी और सीजनल लेबर नीड्स सच एज ड्यूरिंग पीक प्रोडक्शन पीरियड्स और फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स. So second option labor contractors is the correct answer for this question. And our next question is, which of the following methods is the least expensive of recruitment methods? इन सारे options में से कौन सा method जो है सबसे कम खर्चेलू है for the recruitment method? And the options are option number 1 hiring consultants के through hire करना, या employees के referrals से hire करना, या फिर TV पे ad दे के hire करना, और option number 4 placement agencies and management consultants. And the correct answer for this question is option number B employees referrals. employee के जो referrals हैं उनसे हम जब कंसल्ट करके जो recruitment method अप्लाई करते हैं या जो अपनाते हैं, that is least expensive method of recruitment. Employee referrals are typically considered one of the least expensive method of recruitment, जैसे कि as they require minimal advertising and recruitment expenses. Our next question is, which is the process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization? And the options are option number 1 selection, option number 2 training, option number 3 recruitment, and option number 4 orientation. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू अदर एम्प्लॉयज़ एंड फैमिलराइजिंग हिम with the rules and policies of the organization. And the correct answer for this question is option number D orientation. क्योंकि selection, training और recruitment तो ये हायरिंग प्रोसेस में ही होता है. इस टाइम पे कोई भी एम्प्लॉई ये इतना केपेबल नहीं होता है कि वो अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो साथ में काम करने वाले वर्किंग एनवायरनमेंट हैं, उनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन रख सके. देयरफॉर इफेक्टिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कैन हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ फील वेलकम एंड वैल्यूड, which can increase their engagement and productivity. They can also help reduce turnover rates by providing employees with the support and resources they need to succeed in their new roles. Our next question is, what is the exact definition of this question is, sorry. Our next question is, it refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization is what? Options are option number 1 training, option number 2 selection, option number 3 recruitment, and option number 4 orientation. And the correct answer for this question is option number C recruitment. Recruitment एक ऐसा process है जो refer करता है process of searching and prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Effective recruitment strategies can help organization to attract a diverse pool of qualified candidates and increase the likelihood of finding the best fit for the job. Recruitment can also help organizations build a talent pipeline and maintain a competitive edge in the market. Our next question is, which is the process of choosing from pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment? And the options are option number 1 training, option number 2 selection, and option number 3 recruitment, and option number 4 orientation. And the correct answer for this question is option number B selection. The process of choosing from the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment is called selection. It involves evaluating candidates against the job requirements and selecting the best fit for the job. क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को चूज़ करते हैं फ्रॉम दैट पूल. जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनमें से हम चूज़ करते हैं कि जो हमारे पास वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन सा होगा.
जो कि डेवलप्ड स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हम सिलेक्शन भी कह सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट्स अगेंस्ट द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट फिट फॉर द जॉब. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का ऑप्शन नहीं है. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 2 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 3 वेस्टिबल ट्रेनिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 इंटर्नशिप ट्रेनिंग. And the correct answer for this question is option number C, vestibule training. One advantage of vestibule training is that it employees to become familiar with the equipment and processes used in their jobs before they begin performing their duties. This can help to reduce errors, accidents and downtime. You can also improve employee morale and confidence. एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शंस में विच ऑप्शन मीन्स असाइनिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 रिक्रूटमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इंडक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 प्लेसमेंट. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 प्लेसमेंट. क्योंकि प्लेसमेंट रिफर करता है कि ऐसे प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ न्यूली हायर्ड पीपल टू अ स्पेसिफिक जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड वन थिंग आई हैव ऑल्सो टू शेयर विद यू कि जब कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम with this series या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ डू रिमाइंड अस सो वी कैन try our best to solve your problem, your queries, because each and every student is very precious for us. And our next question is, what do we call keeping the employees temporarily away from the person appointing him? And the options are option number 1 promotion, option number 2 demotion, option number 3 layoff and option number 4 transfer. And the correct answer for this question is option number C, layoff. layoff एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए, टेम्परेली कुछ टाइम के लिए वो कंपनीज अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें उनकी जॉब से टर्मिनेट कर देती हैं. ले ऑफ रिफर्स टू द टेम्पररी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रीजंस सच एज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग और इकोनॉमिक कंडीशंस. जब कंपनी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेंटर्ड हो जाती है या अपने कॉस्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, तब ले ऑफ प्रोसेसेस मोस्टली कंपनीज करते हैं. And our next question is, which of the following option is most the suitable option that helps to increase the motivation and satisfaction of employees as their status and salaries are enhanced? And the options are option number 1 placement agencies and management consultants, option number 2 transfer, option number 3 promotion and option number 4 both A and C. Okay, so and the correct answer for this question is option number C, promotion. Because promotion is the key factor that helps to increase the motivation. मोटिवेशन, जो मोटिवेशन लेवल होता है या सेटिस्फैक्शन लेवल होता है एम्प्लॉयज़ का, उन्हें बढ़ाता है और उनकी सैलरी भी बढ़ाता है. प्रमोशन हेल्प्स टू इंक्रीज द मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एज देयर स्टेटस एंड सैलरी आर एनहांस्ड. प्रमोशन रिफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन. जैसे भी अगर कोई पोजीशन पे काम कर रहा है, कोई सपोज कोई बैंक में ऑफिस बॉय है, देन उसका प्रमोशन हो जाता है टू द कैशियर पोस्ट. दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन. प्रमोशन रिफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली accompanied by an increase in pay, responsibility and authority. Therefore, option number C, promotion is the most suitable answer for this statement. And our next question is, which of the following option is the correct one for the vertical shifting of employees? And the options are option number 1 promotion, option number 2 demotion, option number 3 suspension and option number 4 both A and B. Vertical shifting means upside down या फिर upside या फिर downside.
Therefore option number D is the correct answer for this question, क्योंकि both promotion and demotion is the vertical shifting of employees. अगर promote होगा अगर तो वो upward की ओर shift होगा, और demote होगा तो वो downward की ओर shift होगा. Promotion refers to the advancement of an employee to a higher position within the organization. Organization के अंदर ही जब उसका higher post के लिए selection हो जाता है, that is promotion, usually accompanied by an increase in pay. Mostly वो ज़्यादा payment मिलने लगती है उन्हें, उनके पास ज़्यादा responsibilities होती हैं, ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं. जैसे कि whereas demotion is the opposite of promotion. Demotion opposite है promotion के, and it involves the downward movement of an employee to a lower position within the organization, often accompanied by a decrease in pay, responsibility, decrease in authority too. Therefore both promotion and demotion is also known as the vertical shifting of employees. Okay, so our last but not least question is, which of the following is not a type of employee transfer? And the options are option number 1, horizontal transfer, option number 2, vertical transfer, and option number 3, geographic transfer, and option number 4, financial transfer. And the correct answer for this question is option number D, financial transfer. A horizontal transfer is when an employee moves to a position at the same level in different department. Okay, so the correct answer for this question is option number D, financial transfer. A horizontal transfer is when an employee moves to a position at the same level. जो भी उसका level है वो same level पे वो move करते हैं, that is horizontal transfer. And अगर वो upside down या downside up वो move करते हैं, उनके positions move करते हैं, that is vertical transfer. Vertical transfer is when an employee moves to a position higher or lower level in the same department or a different department, and a geographic transfer is when an employee moves to a different location. Okay, so let's take an example for the more better clearance for all these types of transfers, like horizontal transfer, vertical transfer, geographic transfer, and financial transfer. सपोज एक कंपनी है, कंपनी ABC लिमिटेड, एंड वहाँ पे दो मैनेजर्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर एंड मिस्टर वाई इज़ अ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. सो मिस्टर एक्स का ट्रांसफ़र हो जाता है एट द प्लेस ऑफ मिस्टर वाई, एंड मिस्टर वाई का ट्रांसफ़र हो जाता है एट द प्लेस ऑफ मिस्टर एक्स. दोनों ही मैनेजर हैं, बस उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया. दिस इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र. सपोज मिस्टर एक्स का ट्रांसफ़र हो जाता है मिस्टर जेड से, जो कि वो उनके लोअर लेवल पे मैनेजर हैं. सो दिस इज़ वर्टिकल ट्रांसफ़र. और सपोज एंड मिस्टर एक्स का अगर जॉब लोकेशन है नोएडा, बट अगर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है टू बैंगलोर, दिस इज़ जोग्राफिक ट्रांसफ़र. आई होप अब आप सभी को इसकी बेटर क्लियरेंस होगी. But if still you have any doubt, please mention that in a comment section below. Okay, so it's time to let's wrap up our session. Please share your valuable feedbacks, your suggestions in the comment section below. For more updates, kindly WhatsApp your details on the number blinking on the screen and our Telegram channel. Meet you soon in the 7th unit of the business studies. Till then, keep revising and keep boosting your knowledge bank with our question bank. Thank you.